शुभमध्याह्नः। अधुना वयं सर्वे वाच्य इति नूतनं पाठं पठामः। वाच्य अर्थ कथन। वाक्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से जो कहा जाता है वही क्रिया का वाच्य होता है। वाच्य रूपांतरण का एक अंग है। वाच्य means the style which we speak, शैली, कथन। वाच्य के भेद: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। कर्तृवाच्य: कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एक्टिव वॉइस। कर्म प्रधान: कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य। क्रिया प्रधान हो तो भाववाच्य। आप एक समझ लो, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य, क्रिया प्रधान हो तो भाववाच्य, कर्ता प्रधान हो तो कर्तृवाच्य। उदाहरण: रामः पुस्तकं पठति। यहाँ क्यों कर्ता प्रधान है? क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो रही है, इसलिए उधर कर्ता प्रधान है। रामः पठति, ये भी कर्तृवाच्य है। रामः पठति, ये भी कर्तृवाच्य ही है। कर्तृवाच्य के नियम जान लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है तथा कर्तृवाच्य में जो कर्म है वो द्वितीया विभक्ति में होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है। और एक बार दोहराती हूँ, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार चलता है। उदाहरण: Let me explain this in English. Suppose a daughter always follows the father. So here, for example, you take karta as a father, kriya as a daughter. So here, daughter always follow the father. For example, aham prathama vibhakti एक वचन, अहम पठामि। अहम एक वचन, पठामि एक वचन। आवाम द्विवचन, सो क्रिया द्विवचन, आवाम पठावः। वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सो क्रिया प्रथम here also kriya also bahuvachan, so kriya also uttam purush bahuvachan. For example, vayam pathamah, aham pathami, avam pathavah, vayam pathamah. So let us add in this karma. Aham pustakam pathami, avam pustakam pathavah, vayam pustakam pathamah. Okay, suppose karma dvitiya vibhakti. I said that karma is always dvitiya vibhakti. Okay, so let us understand now karma vachya. Only the rule. Okay, then again one time I will explain with the more examples कर्तृवाच्य।
Now let us go to the Karmavachya, only the rules. Karmavachya, कर्ता द्वितीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार. One more time. कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार. Now let us go to the कर्तृवाच्य with examples. रामः वनं गच्छति. रामः वनं गच्छति. रामः प्रथमा विभक्ति, वनं द्वितीया विभक्ति, गच्छति कर्ता के अनुसार. कर्ता के अनुसार. रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, सो गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन. रामः गच्छति. One more example. सीता फलं खादति. सीता कर्ता प्रथमा विभक्ति, फलं कर्मा द्वितीया विभक्ति, खादति क्रियापद कर्ता के अनुसार. तो यह कर्ता कौन है? सीता है. सीता एक वचन में है, इसलिए खादति भी एक वचन में. अगर इधर सीता सीते, अगर इधर सीते हो तो इधर खादतः. सीता खादति, सीते खादतः, सीताः खादन्ति. Now let us see the examples of मध्यम पुरुष. त्वं हससि. त्वं हससि. त्वं एक वचन मध्यम पुरुष, सो हससि मध्यम पुरुष. ओके. त्वं प्रथमा विभक्ति एक वचन, हससि मध्यम पुरुष एक वचन. त्वं हससि द्विवचन युवां, सो हसतः द्विवचन. यूयं बहुवचन, सो हसथ बहुवचन. It means according to the karta, kriyapad runs. So this is called as kartruvachya. What you have to keep in mind is that always kartrupada is prathama vibhakti. Prathama vibhakti might be ekvachan, might be dvivachan, might be bahuvachan. That is not the problem. But the thing is that kartrupad is always prathama vibhakti. And according to kartrupada, kriyapad runs. This is called as kartruvachya. Here one more point I want to tell you that there is no karma here. Okay. So sometimes there might be karma and sometimes there not be karma. So how will you understand whether it is kartruvachya? By seeing the karta and by seeing the vibhakti, you have to understand. Here all prathama vibhakti is used. Tvam hasasi prathama vibhakti ekvachan. Yuvam prathama vibhakti dvivachan. Yuyam prathama vibhakti bahuvachan. So this is called as kartruvachya. With the second person we have seen. Now let us see first person. Aham falani आनयामि. अहम प्रथमा विभक्ति कर्ता, फलानी द्वितीया विभक्ति कर्मपद, आनयामि कर्ता के अनुसार. अहम आनयामि. यदा अहम तथा मी, सो अहम आनयामि. कर्ता के अनुसार क्रियापद. अहम आनयामि. आवाम, सी आवाम. आवाम फलानी आनयावः. आवाम फलानी आनयावः. वयम फलानी आनयामः. अहम
प्रथमा विभक्ति एक वचन, आवाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन, वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन. And here all, फलानी फलानी फलानी, प्रथमा विभक्ति no, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, because it is karma. Karma is always द्वितीया विभक्ति बहुवचन. Only you have to understand for your kind information. The question can ask, okay, in kartruvachya, karma pada is in which vibhakti? This type of question, if someone will ask you, then what will be your answer? In kartruvachya, karma pada is in which vibhakti? So your answer should be that karma pada is always in dvitiya vibhakti. Okay. So here in this way we have understood kartruvachya. Okay. So now let us go to the karmavachya. कर्मवाच्य. कर्मवाच्य में कर्तृपद तृतीया विभक्ति में. रामेण कर्तृपद तृतीया विभक्ति. फलम कर्मपद प्रथमा विभक्ति. खाद्यते ऑलवेज कर्म के अनुसार, मीन्स विच रन्स लाइक कर्म के अनुसार. फलम प्रथमा विभक्ति. सो खाद्यते ऑल्सो प्रथम पुरुष एक वचन, खाद्यते. ओके, सो फलम खाद्यते. Here this question can come. In karmavachya, karmapad is in which vibhakti? So your answer should be in karmavachya, karmapad is always in prathama vibhakti. Okay. So let us see some more examples. So it is in karmavachya, kartrupad tritiya vibhakti, कर्मपद प्रथमा विभक्ति, कर्मपद के अनुसार ही क्रियापद. कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रियापद होता था. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रियापद चलता था, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रियापद चलता है. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. अहम पुस्तकम पठामि, दिस इज कर्तृवाच्य. ओके, एग्जाम्पल. अहम पुस्तकम पठामि, दिस इज कर्तृवाच्य. नाउ लेट अस सी कर्मवाच्य. अहम पुस्तकम पठामि, वाइस वर्सा वी विल सी. मया पुस्तकम पठ्यते. सो मया तृतीया विभक्ति, कर्तृपद इज इन तृतीया विभक्ति. पुस्तकम इज इन कर्मपद प्रथमा विभक्ति. सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सी हियर, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एंड द्वितीया विभक्ति आर सेम. फलम फले फलानि प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानि द्वितीया विभक्ति. पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया विभक्ति. Only the thing is that how will you identify whether it is prathama vibhakti or whether it is dvitiya vibhakti? You have to guess which vachya it is, whether it is kartruvachya or karmavachya. If it is karmavachya, then this is prathama vibhakti. This pustakam is prathama vibhakti. So according to karmavachya, our kriyapad is there. So pustakam pathyate, मया पुस्तकम पठ्यते. सो कर्म के अनुसार ही क्रियापद. सो मया पुस्तकम पठ्यते. वन मोर थिंग I want to tell you that whenever we change from active to passive, whenever we change the verbs from active to passive, we add year. Okay, we add year. So whenever year comes, you have to identify that it is either karmavachya or bhavavachya. Okay, bhavavachya is not there for exam, so I will not explain that, otherwise again you will get confused. So now here I am only discussing about
कर्मवाच्य. So the main identification of कर्मवाच्य is कर्तृपद is तृतीया विभक्ति, कर्मपद प्रथमा विभक्ति, and क्रियापद runs according to the karma and ya is added. Okay, and atmanepadi we are adding for this. Atmanepadi pathati pathyate. Okay, so let us see some more examples and rules also. So if possible write this in your notebook. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के नियम. कर्तृवाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति की जाती है. मीन्स कर्तृवाच्य प्रथमा, if it is there then we translate into tritiya when we are changing. कर्मवाच्य के कर्म की द्वितीया विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य के प्रथमा विभक्ति की जाती है. It means what? कर्तृवाच्य में कर्मपद द्वितीया विभक्ति में रहता है और उसको हम प्रथमा विभक्ति में चेंज करते हैं. कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष वचन अथवा लिंग व विभक्ति वचन कर्म के पुरुष और वचन तथा लिंग विभक्ति के अनुसार हो जाता है. ओके, सो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रियापद बदलता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रियापद बदलता है. कर्तृवाच्य के तव तु प्रत्यय के स्थान पर कर्मवाच्य में त प्रत्यय हो जाता है. ओके, ओनली दिस आई डिडंट टेल यू. सपोज गतवान, गतवान, देन हियर इट विल टर्न इनटू गतः. खादितवान, खादितः. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सह पाठम पठति. सो सह प्रथमा विभक्ति एक वचन, पाठम द्वितीया विभक्ति एक वचन. सो सह एक वचन, सो पठति एक वचन. सो दिस इज कॉल्ड एज कर्तृवाच्य. सो हाउ वी विल चेंज फ्रॉम कर्तृ टू कर्म, फ्रॉम एक्टिव टू पॉसिव. सो लेट अस सी. सह, सह, सह का तृतीया. See the सह तृतीया. सह तौते, तम तौतान, तेन. सो सह तृतीया इज तेन. पाठम का प्रथमा. पाठम का प्रथमा देख लीजिए. पाठ, पाठौ, पाठाः. पाठम, पाठौ, पाठान. सो पाठः हियर इज प्रथमा. सह पाठम पठति, तेन पाठः पठ्यते. So सह पाठम पठति will change into तेन पाठः पठ्यते. सह माम पश्यति. So सह will change into तेन. That is not the problem. So your problem is माम. Okay, so माम, माम is अस्मद् शब्दा द्वितीया विभक्ति एक वचन. See, अस्मद् शब्दा सर्वनाम. अहम, आवाम, वयम, माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान्नः. राइट. सो माम इज द्वितीया विभक्ति. that will change into प्रथमा विभक्ति एक वचन. सो माम will turn into अहम. सो सह तेन माम अहम. पश्यति will become दृश्यते. Okay, so now how it will change? Suppose why it is not drishyate has not come, because for your kind information, aham is uttam purush. Yes, it will come in uttam purush, right? So aham, so see drushye. So why drushye has come? Say with me. Drushyate, drushyete, drushyante. Pratham purush. Okay. दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यद्वे मध्यम पुरुष.
दृश्ये दृश्यावहे दृश्यामहे. So aham drushe. So why not drishyate and drushe understood? So here answer is saha mam pashyati tena aham drushe. So tena aham drushe, like this way I will take more and more examples so you can understand it better. Okay. Tvam pushpani chinoshi. Okay, so chinoshi. Okay, I will draft this for you. See, chinoti chinutaha chinvanti, chinoshi chinutaha chinutha. So tvam pushpani chinoshi. Tvam is ekvachan, so chinoshi. So this is kartruvachya. So let us see how it will. Tvam tritiya, tvam ka tritiya देख लीजिए. त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाम वा युष्मन वहा, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः. So त्वम will turn into त्वया. पुष्पाणि, पुष्पाणि here प्रथमा विभक्ति बहुवचन. चीयन्ते, so पुष्पाणि is बहुवचन, so चीयन्ते. So पुष्पाणि is प्रथमा विभक्ति, so चीयन्ते also प्रथम पुरुष बहुवचन. So प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुष्पाणि, so चीयन्ते also प्रथम पुरुष बहुवचन. So त्वया पुष्पाणि चीयन्ते. Let us see one more example. सः किं कृतवान्, सः किं कृतवान्. सः will turn into tena. Okay. Kim ke kani, kim ke kani. So here kim will come in prathama vibhakti kim. Krutavan. So why not here krutah, ma'am? You can ask me. But kim ke kani. So kim ke kani is napusakalinga. So napusakalinga. So napusakalinga ekvachan. So krutam, not krutah. So tena kim krutam. Okay. So kim krutam. So here kim is napusakalinga. So krutam will also come napusakalinga ekvachan. Krutah, kruta, krutam. So krutah is pullinga, kruta is strilinga, krutam is napusakalinga. Okay. So in this way we have completed this only introduction part. Now tomorrow I will discuss more and more points about this.